speaker, Mr. Saif Hussain sir, who is going to deliver the lecture on the topic, the rights to freedom of religion and belief expression, opinion, assembly, and association in practice. And if I talk about the speaker, Mr. Saif Hussain completed his schooling at Champion School, Bhopal, and also completed his BLLB honors from Aligarh Muslim University, Mushidabad Center. After that, he joined Nalsar, Hyderabad for completion of his LLM. And also, he is the winner of many constitutional quiz competition and moot courts, which was held at his graduation level. He previously worked as an assistant professor at professor of law in Satna, MP, and currently he is working as an assistant professor of law at JLU Bhopal. So today we have Saif Hussain sir, who is going to deliver the today's lecture, and I welcome you here on this platform. This for your information, sir. We are going to we have organizing this program with the collaboration of Wakalat Online, which is also a same kind of organization who is working in the legal field. So over to you, sir, and thank you for joining. Thank you so much, Mr. Kashif. Good evening, everyone. And First of all, first things first, let me just get this off my chest. A big thank you to Legal Research and Analysis and Wakalat Online for inviting me out again here. I hope this human rights, all the series and the lectures have been proven to be beneficial in any manner to you guys. I have been entrusted with the topic of religion, the freedom of religion and assembly, and basically the liberty of religion and how things are managed over here. Of course, because we'll be talking a bit about the Indian constitution as well as the Pakistani constitution, how freedom of religion works in India, and how the constitution of Pakistan has advocated the same for their land, or the lex loci, if you would like to call it. And the major thing that would be seen is how freedom of religion uh, differentiates itself in a secular country and a country that is that has basically adopted a particular religion. So yeah, so beginning with Article 25 of the Indian Constitution. If you guys are a lot of people are from Pakistan, you must have if the law students have seen Article 20 of the Constitution of Pakistan, they are more or less the same when we talk about the Indian Constitution and the Constitution of Pakistan. Article 25 and Article 20, basically, they talk about three major rights that would be the right to practice, profess, and propagate one's own religion. So, first things first, just dusting off the basic concepts. Practicing means to perform one's own religious whatever practices or rites or customs there are. That means to practice. Propagate means spreading one's own religion, and and profess means to basically confess to be following one particular religion. India, as you might know, is a secular country. It declares itself as a secular country in the preamble of the Constitution, which was brought down, of course, by the 1976 amendment. Although we still had Articles 25 to 28 guaranteeing fundamental rights to religion of people. Unlike Pakistan, India chose to be a secular country. While when you look into Article 2 of the Constitution of Pakistan, Article 2 calls for Islam being the state of the religion, or rather religion of the state. No such approach has been taken from or by the constitution makers of India. But in the course of this lecture, we'll probably try to look into how freedom of religion differs in both countries. Right. So first of all, let us talk about the Article 25 of the Indian Constitution, or basically
the constitution that guarantees a secular nature of the country. So against the concept of secularism that is or that exists in the US, neither India nor Pakistan have adopted the actual concept of secularism. That is, according to the Constitution of US and the working of the US Constitution, secularism means that the government shall be completely devoid of religion. So there stands a basic separation between religion and the government. This has been seen in the earlier times when we talk about the medieval times and the medieval Europe, where it has been where there have been witnessed dark ages and economic depression. So when we talk about the natural law jurisprudence of those times, dark ages and the medieval Europe, basically, the one common thing that was found was there was no segregation or separation of religion and पॉलिटिक्स, या फिर जब हम गवर्नमेंट और रिलीजन के बारे में बात करते हैं या मजहब के बारे में बात करते हैं, तो वो एक ही चीजों की तरह उसको माना जाता था, और जो जो स्टेट भी हुआ करता था उसको चर्च स्टेट बोला जाता था, क्योंकि जो चर्च हुआ करता था उसका इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था किसी भी स्टेट के गवर्नेंस में, तो हम वहां पे ये सेग्रीगेशन नहीं करते थे. बट एज एज टाइम्स फर्दर्ड आउट, और ये चीज हमें समझ में आई कि दिस दिस डज नॉट ऑलवेज गो अलोंग इन द लॉन्ग रन. और फिर यूएस में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने बोला कि द गवर्नमेंट और एंड द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस शैल बी कंप्लीटली डिवोइड ऑफ रिलीजन. ऑन द अदर हैंड, जब हम इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर सेक्युलरिज्म के बारे में बात करें, तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो बात करी जाती है कि हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए, हर रिलीजन के सेंस में न्यूट्रल रखा जाए. ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म दैट इंडिया एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड फॉर इटसेल्फ. टॉकिंग अदरवाइज, when we talk about the Constitution of Pakistan, Article 2 clearly mentions, and there is this explicit mentioning of the fact that there shall be a state religion, and that would be Islam. So the concept of secularism, although not present, but right from Article 20 and then further on from Article 21 and 22, the Constitution of Pakistan also provides for the protection of the religious rights of the minorities. अगर हम आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें एक सेंस में कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट क्या डिफर करता है, तो आंसर जो होगा उसका वो नो होगा. जो एग्जैक्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लॉ और मोरालिटी एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 20 में, वही सेम आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 25 में. आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी सेम देखने को मिल जाएगी, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन. So basically, although the Constitution of Pakistan and the governmental setup of Pakistan, although they have not advocated for a secular setup in their government, but अगर हम एसेंस में देखते हैं तो माइनॉरिटीज जो भी हों उनके बारे में भी आर्टिकल 20 उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, उनके रिलीजियस राइट्स को, उनके राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन को. आर्टिकल 20, फिर उसके बाद आपका आर्टिकल 21 में आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी. तो वही चीज आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं. अब द थिंग अबाउट आर्टिकल 25, और थोड़ा बहुत मैंने इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 20 का भी, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं पढ़ रहा था कुछ कुछ. इट इज काइंड ऑफ लाइक ऑन द सिमिलर लाइंस. जब हम आर्टिकल 25 के बारे में बात करते हैं तो वी नीड टू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंडियन जुडिशरी ने इवॉल्व किया था, जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन. अब अगर हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन के बारे में बात करें, या फिर उसको हम शॉर्ट में ईआरपी बोलते हैं,
तो अगर हम ईआरपी के बारे में बात करते हैं तो वो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं जो किसी भी रिलीजन को उसका एक्चुअल कलर देती है। सो एक्चुअल कलर देने का मतलब जो है वो इस तरह से कंस्ट्रू किया जाता है कि इफ दोस प्रैक्टिसेस आर बेसिकली स्ट्रिप्ड आउट ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, उस रिलीजन का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा, या फिर वो जो रिलीजन है वो ट्रंकेट हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो when we talk about इस्लाम में there are certain essential practices जिनके बारे में बात की गई है. One of them being salat, one of them being azan, although has also been recognized as an essential religious practice that is related to the Islamic culture. But there have been cases जहाँ पे azan on the loudspeaker has not necessarily been construed as an essential religious practice, और इसीलिए हम उसे as a fundamental right नहीं क्लेम कर सकते। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, आर्टिकल 20 जो है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी एक फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन ऑफ कोर्स। तो वहां पे भी फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है। सो कहीं ना कहीं जो इंटरप्रिटेशन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का है वो आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिल जाएगा। सो द पॉइंट दैट आई वाज ब्रिंगिंग फोर्थ वाज द फैक्ट कि अजान जो कि एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह रिकॉग्नाइज जरूर किया गया है, बट अजान ओवर लाउड स्पीकर्स को not necessarily it has been recognized as an essential religious practice, because of the fact कि जब जब ये केस जुडिशरी के पास गया था तो जुडिशरी का जो मानना था वो ये था कि because loudspeakers are an innovation of technology and technology has not always been a part of the religion, तो हम अजान को essential religious practice में और rather अजान on loudspeaker को essential religious practice में recognize नहीं करेंगे। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का जो है वो ये है कि ऑल्दो यू डू हैव अ फंडामेंटल राइट टू वर्शिप, बट वर्शिपिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस चेंजेस। जहां तक आप किसी किसी इंसान के फंडामेंटल राइट टू वर्शिप के बारे में बात करते हैं तो वो जरूर उसका फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड है अंडर आर्टिकल 25, बट जहां पे हम एट अ पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे गड़बड़ शुरू होती है। क्योंकि अगर आप फंडामेंटल राइट क्लेम करने लग जाएं किसी पर्टिकुलर प्लेस के, तो वहां पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज भी क्वेश्चन में आने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में बात कर रहे हैं तो 1978 में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया था इन इफेक्ट, तब वन थिंग दैट वाज डन वाज कि द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज removed or rather downgraded to a mere constitutional right. So पहले जहां पे एक राइट टू प्रॉपर्टी होल्ड करना जो है अपने आप में एक फंडामेंटल राइट था, उसको हमने थोड़ा सा डिमोट करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में तब्दील कर दिया। सो अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में उसको चेंज कर देने का इफेक्ट भी यही हुआ कि जहां पे आप फंडामेंटल राइट टू वर्शिप मांग रहे हैं तो वहां पे आप फंडामेंटल राइट टू वर्शिप एट अ पर्टिकुलर प्लेस नहीं मांग सकते। सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट चाहती है बाय वे ऑफ देयर लेजिस्लेटिव कैनन, वो अगर कोई भी ऐसी वर्शिप प्लेस होगा उसको वो एक उसका नेचर जरूर चेंज कर सकती है, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो मॉस्क हो, चाहे वो कोई चर्च हो, या वो कुछ भी हो। तो बेसिकली द फंडामेंटल राइट टू वर्शिप एट अ पर्टिकुलर प्लेस कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। एक और अभी अगर बहुत ही रिसेंटली आपने कल परसों का ही वीडियो है, अगर दिल्ली का आपने वीडियो देखा हो, सो पीपल वर ट्राइंग टू ऑफर द फ्राइडे नमाज ओवर रोड, मतलब एक रोड के ऊपर चलती होती रोड पे दे वर ट्राइंग टू ऑफर नमाज, और जो चीज उनको बोली गई थी कि basically if you have the fundamental right to worship, you do not have the fundamental right to worship at a particular place. I'm afraid there was a certain question that was posed that has been lost. uh, let's not just pose questions right now. We'll take the question answer part at the end of the session. Like I'll grant 10 to 15 minutes for just questioning basis. हाँ, तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि आर्टिकल 25 जो है, ऑल्दो इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट टू वर्शिप, बट एट अ पर्टिकुलर प्लेस जो है
वो वर्शिप करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। सो इसी वजह से a lot of issues are raised and questions are raised कि क्या हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर राइट होना चाहिए हमारे पास कहीं पे वर्शिप करने का या नहीं होना चाहिए, एंड द आंसर इज नो। आपका अगर हम इंडियन सेटअप में बात कर रहे हैं तो किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने का या किसी भी टेम्पल में पूजा करने का आपका जो राइट है वो नेसेसरीली फंडामेंटल राइट नहीं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर उसको अगर हम और टेक्निकल सेंस में देखें तो राइट टू प्रॉपर्टी वो आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस सेटअप। So, as we were talking about Article 20 of the Constitution of Pakistan as well, exactly वही सारी बातें हैं, वही सारे restrictions हैं. There is absolutely no difference. Essential religious practices के बारे में भी हम बात कर रहे थे. So, another case जो कुछ 2019 के around आया था, that was the in India basically. That Hello, was can the, I speak one thing, sir? yeah. Sir, there was one hue and cry after hijab ban. You know, when there was in Karnataka, Right. hijab ban case was there. But still, Supreme Court has verdict given, but they also gave the opinion of ERP that this is hijab is not a essential part of the practice. So, how much do you agree when Supreme Court gives these decisions that this is not a part of ERP? When you will, on the one hand, you are giving a right to equality, right to freedom of speech and expressions, and on the one hand, you are giving a fundamental right, and the other part, you are how you balance that Article 14 of the right to equality with the right Article 25. All right, we'll discuss this in the later part जहाँ पे question and answer होगा. I'll try to address it in a very short form for your convenience right now. So let us also talk about the hijab verdict and the doctrine of essential religious practices. So there was a split decision by the Indian Supreme Court. There was a division bench of 2 judges, and one of them decided in favor that a hijab to a girl student should not be prohibited in any manner because it's her liberty. And second of all, the second judge took the approach because it is not an essential religious practice. It should not be allowed in an educational institution, which is basically secular in nature. So of course, this two-judge bench did not come up to a decision that we wanted. But of course, now the matter has been, of course, referred to a larger bench, and the point of debate really here is क्या किसी लड़की का हिजाब पहनना, do we necessarily have to relate it towards essential religious practices, या फिर हम उसको एक लिबर्टी और फ्रीडम की नजर से भी देख सकते हैं. And this was the major debate, and this was the actual decisions of both the justices of the Indian Supreme Court. One of them went in favor of liberty of the student, and one of them was about the fact that hijab is not an essential religious practice, so it should be prohibited. Because of the fact that it is a secular institution and it is an educational institution, there are basically two problems with an institution being called secular and being called an educational institution. It is one of them being that there is a uniform prescribed for all students, and यूनिफॉर्म का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी या फिर जो स्टूडेंट्स हैं आपस में वो अपनी इनइक्वालिटीज को ना देखते हुए एक यूनिफॉर्म मैनर में रहें. अब वो इनइक्वालिटीज किसी भी तरह की हो सकती हैं. दे कैन बी फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज, दे कैन बी रिलीजियस इनइक्वालिटीज एज वेल. So that is why the sole purpose of uniform is कि uniform इसलिए prescribe की गई है कि हम अपने financial, religious और cultural differences से ऊपर उठ के एक दूसरे को देख पाएं. But on the other hand, उसका मतलब फिर ये भी होता है कि we have to get rid of each and every cultural symbol. जो भी किसी भी तरह का cultural symbol होगा, we need to get rid of it when we are talking about any secular institution
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो दैट वुड मीन कि बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट को जो है हिजाब भी पहनना अलाउड नहीं होना चाहिए, किसी भी हिंदू स्टूडेंट को तिलक लगाना अलाउड नहीं होना चाहिए, कलावा पहनना अलाउड नहीं होना चाहिए. इस तरह का कुछ भी, कोई भी कल्चरल सिंबल जो किसी भी पर्टिकुलर कल्चर के तरफ या कल्चर या रिलीजन की तरफ पॉइंट आउट करता हो, वी नीड टू जस्ट एब्सोल्युटली गेट रिड ऑफ इट, एंड दैट इज वन थिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक. इंसान का अपना अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में बात करें तो आर्टिकल 19(1)(a) में किसी इंसान का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है. तो व्हाट वन वांट्स टू वेयर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. Article 21 of the Indian Constitution and I'm forgetting the article in the Pakistani Constitution. They both actually guarantee the right to freedom of liberty, and this right to life and personal liberty. It encapsulates between itself a lot of subsidiary rights, and one of them being the right to privacy. So also the right to choose what I want to wear is also directly in clash with the decision कि क्योंकि ये essential religious practice नहीं है इसलिए हमें इसको completely discard कर देना चाहिए. So of course, because that is a matter that is sub judice, it has not yet been decided. So एक particular तरफ पे हमें sway होना जो है it won't necessarily be correct. So let us wait for the judgment of the Supreme Court. We'll probably get our answers very soon. So I hope I have sort of satisfied you on the point. But yeah, we'll discuss it later if there is something that you need to ask even further. Just one second. Yeah. So the point that we were discussing was the essential religious practices doctrine, and how it has sort of proved or proven itself to be sort of problematic, because there have been instances where not necessarily logic has been involved, just blatant reading of scriptures and just plain reading and not actually reading into the scriptures has led to a lot of practices being labeled as essential and a lot of practices being labeled as non-essential. As before the question, I was talking about the Sabrimala temple case where Hindu women, or rather the menstruating Hindu women, were not allowed entry into a temple because of the fact that the deity that was installed in the temple, or the deity that was the leader. Leader would be the wrong thing. The god of the temple was a Bal Brahmachari. So any menstruating woman would not be allowed, or any and this does not stand for like a woman that is menstruating. That is in itself considered to be very the woman is already considered to be dirty according to religion. बट उसके अलावा कोई भी अगर menstruating एज की भी वुमन होगी वो उस टेम्पल को विजिट नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी जो आइडल हैं जो इंस्टॉल किए गए हैं उस टेम्पल में वो बाल ब्रह्मचारी हैं. फॉर दोज हु डू नॉट नो, द आइडल इज सेलिब्रेट. राइट. सो मूविंग ऑन. सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये उठा था सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीज डिसाइड करने को गई थी कि क्या किसी इंसान का या औरतों का बेसिकली फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए किसी भी टेम्पल में अपना वर्शिप ऑफर करने का या फिर वर्शिप करने का बेसिकली. So one of the judges that was of the dissenting opinion apparently was ironically herself was a woman who said ki this being a purely religious matter and being a part of the essential religious practices, we should not actually interfere in this matter. हमें यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए किसी भी मैटर में, और जो जैसा हो वो वैसा चलने देना चाहिए. बट द मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने यही कहा कि आर्टिकल 15 जो है, जो कि पब्लिक स्पेसेस को ओपन करता है और जहां पे हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं जो किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर डिस्क्रिमिनेट ना करती हो, उस हिसाब से ये जो प्रोविजन है कि कोई भी मेंस्ट्रुएटिंग वुमन जो है वो एंटर नहीं कर सकती किसी भी टेम्पल में,
ये अपने आप में डेरोगेटरी होगा और वायलेटिव होगा बहुत सारे आर्टिकल्स के, इंक्लूडिंग द राइट टू इक्वालिटी इन इटसेल्फ, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ, द फ्रीडम ऑफ लिबर्टी इन इटसेल्फ। इन सभी को क्योंकि ये वायलेट कर रहा है, इसीलिए इस प्रोविजन को खत्म किया गया था। एंड सो इस तरह से लॉट ऑफ टाइम्स असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन जो रही है इंडिया में, वो कई बार क्वेश्चन में आई है और Sir, कई what about the doctrine of essentiality? डॉक्ट्रिन ऑफ I'm sorry, I didn't hear you. What are you talking about? Let's please keep the questions to the end. There's not a lot that needs to be discussed. Like in 15 or 20 minutes, we'll move on to the question answer session. Please, thank you so much. So yeah, essential religious practices doctrine यहाँ पे इस तरह से खत्म होती हैं। अब there is another thing that catches the eye of a person कि एक जगह पे किसी इंसान को हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हैं और वहीं पे उसके ऑपोजिशन में वी क्रिएट ब्लास्फेमी लॉज। So blasphemy laws are something which actually try to punish an aggravated hate speech basically. So according to the laws of Pakistan, or the blasphemy laws of Pakistan rather, blasphemy is punishable with fine and punishment up to death. And in a lot of Islamic countries you'll find कि जहाँ पे भी कोई इस्लामिक कंट्री है या फिर कोई ऐसा स्टेट है जो एडवोकेट करता हो अपना पर्टिकुलर रिलीजन, वहां पे जो ब्लास्फेमी का जो फाइन होता है, या फिर बेसिकली ब्लास्फेमी का मतलब होता है किसी की रिलीजियस जो भी आइडल्स हैं या उनके जो आइडियल्स हैं उनको आप इंसल्ट करते हैं किसी मैनर में, गॉड को या फिर प्रोफेट को आप किसी भी तरह से अगर उनको इंसल्ट करते हैं तो वो ब्लास्फेमी में आता है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और ब्लास्फेमी का जो है वो हमेशा से एक क्लैश रहा ही है। आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब बारे में हम बात करते हैं तो इस तरह का कोई भी स्पीच जो है जो ऐसा ग्रुप्स के बीच में किसी तरह की कोई एनिमिटी प्रमोट करता हो वो रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड है। बेसिकली आप हेट स्पीच नहीं कर सकते। बट यहाँ पे फिर दिक्कत तब आती है जब क्या आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी के भी रिलीजन को क्रिटिसाइज करने तक भी एक्सटेंड नहीं हो सकता। The problem, the exact problem with this point is the fact that it becomes very difficult to actually segregate क्या freedom of speech and expression है, क्या वहां पे hate speech है, and what actually qualifies as blasphemy. what sounds reasonable to one group of persons can actually sound insulting and blasphemous to another group of persons. इसीलिए we have set in blasphemy laws. उसके साथ साथ ब्लास्फेमी लॉज के साथ कई बार आपको मॉब जस्टिस भी देखने को मिल जाता है, जहां पे कुछ भी अगर ब्लास्फेमस एक्टिविटीज की जाती हैं तो मॉब जस्टिस इन द सेंस कि जहां पे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे पहले कोई कोई ऐसे जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ग्रुप्स हों वो किसी को पकड़ के कोई अपनी सेल्फ जस्टिस दे दे। जैसा कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल इसका चार्ली हेब्डो केस है जो रिपोर्टर्स के साथ हुआ था। बेसिकली दे मेड अ कैरिकेचर और रादर इंसल्टिंग कैरिकेचर ऑफ द प्रॉफेट एंड बेसिकली उनके ऑफिस में जाके थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ था, थोड़ा बहुत काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था। सो अगर इसीलिए वी नीड ब्लास्फेमी लॉज और आर्टिकल 19(1)(a) या फिर रादर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते कि वो ब्लास्फेमस स्पीच को भी अलाउ करे या फिर हेट स्पीच को भी अलाउ करे। प्रॉपर लॉज हमारे यहाँ इंडियन पीनल कोड में भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो भी पाकिस्तान का क्रिमिनल कोड है उसमें भी आपको ब्लास्फेमी लॉज देखने को मिल जाएंगे। ब्लास्फेमी का एक दूसरा कोड अलग है। सो दिस इज हाउ ब्लास्फेमी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्क। जस्ट वन, अगर हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल लॉ में भी रिकॉग्नाइज्ड है फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस
ओन कॉन्शियंस, और यूडीएचआर में अपने आप में मेंशन है, आईसीसीपीआर में अपने आप में मेंशन है, किसी भी इंसान की सोशल कल्चरल राइट्स के बारे में आईसीईएससीआर में मेंशन है। बट अगेन द प्रॉब्लम विद इंटरनेशनल लॉ इज कि क्योंकि वो अपने आप में उनको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, तो वहां पे इश्यूज आते हैं। सो अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट the UDHR and the ICCPR and the ICSCRs, your everything, वहां पे भी आपको फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस ओन कॉन्शियंस जो है वो अलाउ किया गया। अभी हाल ही में अगर आप लोग न्यूज देखते हो तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आया, और इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना पोस्ट इंडिपेंडेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला। और बेसिकली अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब बेसिकली यही है कि अब उस स्टेट में, पर्टिकुलरली उत्तराखंड में, पर्सनल लॉस के लिए अब कोई जगह नहीं रह गई है। सो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में इज वेरी प्रॉब्लमैटिक इन द सेंस कि इट इज वर्दी ऑफ अ लॉट ऑफ डिबेट। देयर आर इक्वली गुड पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये डिबेट जो है वो काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है। एंड देयर आर इक्वली गुड पॉइंट्स। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बारे में भी बात करें, चाहे हम इक्वालिटी के बारे में बात करें, चाहे हम विमेन की प्लाइट के बारे में बात करें, बहुत सारे देयर आर इक्वली गुड पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए या इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। जो भी सारी चीजें हैं वो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मिल जाएंगी। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट प्लान्स इन इट्स नेक्स्ट स्टेप्स टू डू। यूनिफॉर्म सिविल कोड को थ्रू आउट द कंट्री अप्लाई किया जाए। अब द फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज कि क्या पर्सनल लॉज जो होते हैं क्या वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आते हैं? पर्सनल लॉज जो बेस्ड होते हैं दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन the sources that are derived completely from a particular religion। अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो वो कुरान और सुन्ना दोनों को ही मेंशन करता है। और जो भी लॉज बनाए जाएंगे, अगर आप देखना चाहेंगे तो आर्टिकल 227, आर्टिकल 228 जो है वो एक इस्लामिक काउंसिल के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 227 के बारे में अगर आप देखेंगे तो वहां पे कुरान और सुन्ना को प्राइमेसी दी हुई है। उसके अलावा जो है दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी बात की गई है कि उनका पर्सनल लॉज उनको गवर्न करने के लिए they'll be allowed। बट अदरवाइज ये दो चीजों को पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है, कुरान बीइंग the most prominent source of Muslim personal law and Sunnah being the second most prominent source of Muslim personal law। तो इन्हीं दोनों को जो है इन्हीं दोनों के बारे में बात की गई है एज सच, पर्टिकुलरली इजमा और कियास, जिनको ऑल्सो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ माना जाता है, उनके बारे में मेंशन मैंने आर्टिकल 227 में तो नहीं देखा। सो अगेन being a country that advocates for a particular religion, it is completely different। जो एप्लीकेशन होता है किसी भी चीज का, चाहे आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करें, चाहे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें, तो काफी डिफरेंट होता है when we talk about the application of personal laws in a country which advocates a particular religion and a country that is neutral towards all religion। सो पर्सनल लॉज के बारे में भी अगर हम बात करें तो पर्सनल लॉज भी अपने आप में थोड़े प्रॉब्लमैटिक मालूम पड़ते हैं, इन द सेंस कि जब क्रिमिनल लॉ जो है वो सबके लिए यूनिफॉर्म है, तो सिविल लॉ क्यों नहीं लोगों के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए? क्योंकि इससे पहले जब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, तो जब इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री सिस्टम, मतलब एंशिएंट क्रिमिनल सिस्टम भी जब हम देखेंगे तो वो भी जो था वो डिस्क्रिमिनेटरी था, वो बेस्ड ऑन रिलीजन था, बेस्ड ऑन कास्ट था बहुत ज्यादा। अगर कोई भी हिंदूज में अगर कोई भी क्राइम होता है तो एक ब्राह्मण को जो है कुछ अलग पनिशमेंट मिलेगा सेम एक्ट के लिए, एक शूद्र को या एक वैश्य को जो है और ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरह से इट वाज डिफाइंड बेस्ड ऑन कास्ट और या फिर क्लास बोल सकते हैं आप। तो उस हिसाब से पर्सनल लॉ जो था वो जो क्रिमिनल लॉ था
वो यूनिफॉर्म नहीं था। उसके साथ साथ फिर जब मुगल्स का एडवेंट हुआ इंडिया में, और जब मिडीवल पीरियड में जब 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 उन्होंने प्रॉपरली सेटल किया, तो फिर वो अपने साथ साथ एक नई चीज लेके आए, शरिया लॉ लेके आए। शरिया लॉ का अगर अगर कोई एक पर्टिकुलर सोर्स है जो जो देखा जाए, तो वो औरंगजेब की जो जो बुक है फतवा आलमगीरी, वो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्सेज ऑफ शरिया लॉ, क्योंकि वो माना जाता है कि फतवा आलमगीरी में प्रॉपरली शरिया लॉ को जो है कंपाइल करके जितने भी रूल्स इधर उधर स्कैटर्ड थे, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर वाज नो पर्टिकुलर बुक जहां से शरिया लॉ निकल के आ रहा हो, मतलब कुरान से तो निकल के आता ही है, बट स्कैटर्ड रूल्स थे। तो फर्स्ट टाइम जो कंपाइलेशन जो हुआ था वो फतवा आलमगीरी में बाय औरंगजेब किया गया था। तो शरिया लॉ जो था वो भी क्रिमिनल लॉज के बारे में काफी काफी बात करता था, और क्रिमिनल लॉज को यूनिफॉर्म बनाए रखने के बारे में बात करता था। बट अगेन जो क्रिमिनल ट्रीटमेंट था और क्रिमिनल जस्टिस का जो सिस्टम था अंडर द मुस्लिम रूल, उसको थोड़ा सा बारबेरिक समझा जाता था अपने टाइम पे, क्योंकि वहां पे हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी से ज्यादा रेट्रिब्यूटिव और डिटेरेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम मानते थे। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों द ब्रिटिशर्स फेल्ट कि हमें एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ बनाना चाहिए। और फिर जो 1830 से शुरू हुआ सारा आपका लॉर्ड मैकॉले और एंडरसन मैक्लोड एंड मिलेट, जो भी लॉ कमीशन बना, और उसके बाद 1860 में उसका रिजल्ट आया इंडियन पीनल कोड, तो उन्होंने एक कंपाइलेशन ये कर दिया कि अब जो भी क्रिमिनल लॉज होंगे वो सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होंगे। इससे पहले नहीं होते थे। जो भी उसके अलावा जो दीवानी रूल्स जिनको बोला जाता है, या फिर सिविल मैटर्स जिनको बोला जाता था, तो जब जब तक मुगल्स जो है, जब तक मिडीवल पीरियड में जब तक मुगल्स रहे हैं, तो उनका मानना यही था कि एक कोई भी जो जो पर्सन अगर इन क्वेश्चन है, अगर वो मुसलमान है तो उसके ऊपर जो है इस्लामिक रूल्स लगने चाहिए, और अगर हिंदूज जो हैं उनके ऊपर उनके हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग उनका जो दीवानी मामला है या फिर सिविल मैटर जो है वो उस हिसाब से सेटल किया जाना चाहिए या फिर एडजुडिकेट अपॉन किया जाना चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या अगर हमने क्रिमिनल लॉज को अगर हमने कॉमन बना दिया, सबके लिए यूनिफॉर्म बना दिया, तो व्हाई नॉट हम सिविल लॉज को भी कॉमन और यूनिफॉर्म बना दें। तो उससे बेसिकली इक्वालिटी आ जाएगी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान होता है। तो ये एक काफी टाइम का डिबेट रहा है कि क्या हमें सिविल कोड भी जो है, या फिर जो 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 सिविल मैटर्स है, क्या हमें उनको भी यूनिफॉर्म नहीं बना देना चाहिए। एंड कंसिडरिंग इंडिया टू बी सो डिवर्स ऑफ अ नेशन, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी जिस जिस नेशन में है, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो थोड़ा सा इनक्रेडिबल सा लगता है कई बार। अगर ऑन दी अदर हैंड हम पाकिस्तान में बात करें, तो पाकिस्तान में इस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बिकॉज द एडवोकेट फॉर इन और इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, वहां पे हमें इस तरह के क्वेश्चंस को पुट अप करने की जरूरत नहीं। बट बात करते हैं और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे फिंगर्स जो है वो रेज होती हैं, आईब्रोज रेज होते हैं कि क्या हम एक सिविल कोड यूनिफॉर्म नहीं ला सकते। एंड द आंसर इज यस और नो करना जो है उसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उस चीज में। हर इंसान का जो पर्सनल लॉ है वो उसके रिलीजन पे बेस्ड है। चाहे आप चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ को उठा लें, तो वो कुरान और सुन्ना मेजरली, उसके अलावा इजमा कियास इन पे बेस्ड है। अगर आप हिंदू पर्सनल लॉ के बारे में बात करें, तो वो श्रुति स्मृति कस्टम्स इन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड है, कमेंट्रीज डाइजेस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो उसका जो रूट है, जो मेजर रूट है, वो आपको रिलीजन और फेथ के अंदर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो भी वेद्स हैं, हमारे उपनिषद्स हैं, उन सब में से हिंदू पर्सनल लॉ ही निकल के आता है। तो द पॉइंट इज देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज इन द कंट्री जिनके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसी में एक बात ये है कि अगर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड कंट्री में लाके कुछ लोगों को अगर एग्जेम्प्ट कर दिया कि पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड बी एग्जेम्प्ट from the application of the uniform civil code, then there is absolutely no point of implementing the uniform civil code per se.
सो इसी वजह से और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव inconveniences की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज जस्ट बीन अ मेयर डिबेट फॉर डेकेड्स नाउ. आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो उसने एक डीपीएसपी की तरह प्रिस्क्राइब कर रखा है कि स्टेट में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. बट क्योंकि देयर आर सो मच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज, वो डिबेट से आगे नहीं बढ़ा. अब हमने पहली बार ये उत्तराखंड में जो चीज हुई, स्टेट ऑफ इंडिया, वहां पे हमने ये चीज देखी कि एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इम्प्लीमेंट किया गया. पहला स्टेट था उत्तराखंड. पोस्ट इंडिपेंडेंस गोवा में तो हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड ही अप्लाई होता था. सो मसला जो है वो आपका असेंबलीज और आर्टिकल 25 और फ्रीडम ऑफ रिलीजन से ज्यादा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज का हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. So to sum up the lecture, basically जो हमारा इंडिया में और जो पाकिस्तान में, दोनों ही कंट्रीज में जो आइडिया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, वो खासा सेम मालूम होता है. अगर आप आर्टिकल्स 20 को और आर्टिकल्स 25 को अगर आप एक कंपैरेटिव टाइप की स्टडी करेंगे, तो एग्जैक्टली आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, वही प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपगेट के बारे में बात करता है. डिफरेंस नहीं है. But ultimately, when we go into the intricacies and when we go into, or rather dive into the complexities of two legal systems, आपको ये चीज बाहर देखने को मिलेगी कि एक ऐसा स्टेट जो कि न्यूट्रल हो रिलीजन को लेके, और एक ऐसा स्टेट जो एडवोकेट करता हो एक पर्टिकुलर रिलीजन को, वहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो किस तरह से डेल्व आउट होता है. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू end my lecture, and we can open the stage for any questions or queries. Thank you so much. Hello. Mr. Kasif, I think there are people who would like to ask questions. Please moderate this session, please. Thank you so much. Hello. Yes. Anyone who wants to ask any question, then you can ask, please. Sir, I have one question. Yes, please go ahead. Sir, you said that Sharia law is derived from Fatwa Alamgiri, where I feel that Sharia law is completely derived from Bukhari Sharif, Abu Dawud, Muslim Sharif. These are the hadith important book. So the Fatwa Alamgiri, I did not say that Sharia law is derived from Fatwa Alamgiri. It is of course based upon जो भी आप सुन्नास और कुरान के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं से शरिया लॉ निकल के आया है. फतवा आलमगिरी ने सिर्फ एक काम किया है कि दे हैव कंपाइल्ड ऑल द रूल्स ऑफ द शरिया इनटू. It has not originated in itself. All right. Anything else, please? Okay. Now, my second question is this: that you are talking about the uniform civil code. There is so many debate about the uniform civil code. So, do you feel that the international community can interfere when UCC will unanimously implement in India? So, means it violates so many freedoms of fundamental articles, right from Article 12 to 25. So many articles will be violated. What is the role of international community if the state start doing such kind of practice? All right. So when we talk about the international community and international law per se, the international community or the communion of the states that we call them cannot necessarily have a say what a particular country is doing, because of the fact India being a sovereign country, they are well within their rights and well within their competence to actually
implement a uniform civil code in their own territory. And as far as your question is concerned, I don't think international community can do much about it. Of course, like we have seen in the past कि जितने भी wars हुए हैं, be it Russia or Ukraine, be it Israel or Palestine, we have seen international community as a moot spectator and nothing more than that. Be it the United Nations or anything at all. So, Uniform Civil Code being implemented within the territory of India looks to be a very minuscule of a concern for the international community. So, the answer to your question would be no. There is absolutely nothing that the international community can do. And as far as violations of fundamental rights that you cited, it does not necessarily violate a lot of fundamental rights other than the freedom to practice one's own conscience and their own faith and beliefs. Otherwise, when we talk about Article 14 to 18, मतलब जो हमारे right to equality वाले जो fundamentals हैं, on paper that would be more fulfilled by uniform civil code. On paper, that is why मैंने on paper use किया. So it would be a bit difficult, of course, but the violation of fundamental rights जिनके बारे में बात की जा रही है, उनको consideration में लेके ही इस तरह का कोई भी code बनाया जाएगा, उसके बिना नहीं बनाया जाएगा. Sir, my second question is that when we were studying the international law, most of in the syllabus they used to ask the questions like international law is a very weak law set by Austin, and international law is a vanishing point of jurisprudence. This is just a beginning. So now it is the question arises between 18th century. Now it is now we are entering in 23rd century. So what do you feel? Is the international law still in the vanishing point of jurisprudence, or international law is a weak law? As you just mentioned, the international community is a mute spectator when there is a war between two countries. They can't do anything. Even the Zulfikar Ali Bhutto, when they were in the United Nations, they were asking help for the United Nations. The theory talk all there. So what do you feel? The international law becomes stronger, or it is still going to be weaker and weaker? All right. So let us talk about the definition of Austin that you just cited. So according to Austin, why he considered international law as a weak law was the fact because he considered law to be a command of the sovereign that was backed by sanction. So the biggest problem with international law is that there cannot be a sovereign and there can definitely not be a sanction. जो सबसे बड़ा one of the most prominent characters of a country is their sovereignty. जब इंडिया एंड पाकिस्तान जब jointly we were being ruled by the British, तो वहां पे हमारे पास sovereignty नहीं थी. We did not have any sovereignty per se. They were the ones, or we can call masters basically, who created laws for us, who governed us. But after independence and of course after the separation of India and Pakistan, we advocating the two nation theory by Muhammad Ali Jinnah, of course Qaid-e-Azam. So the point was that we actually gained independence and politically we gained sovereignty. So within our sphere, we were competent to do whatever we wanted according to our own demography and according to our legislative conveniences. The biggest problem with international law is that we cannot compromise with any one country's sovereignty. Like for example, if in a war or in an armed conflict, it is evident, let us say that Russia is wrong on their part in the Russian-Ukrainian war, or Ukraine is wrong on their part in the Russian and Ukrainian war. Why does not any international community like that of the United Nations intervene and actually, pacify the issue? That is the biggest problem. The major purpose of United Nations was to prevent another world war, right? After the Second World War, यही United Nations का main motto था कि हमें इस तरह की कोई वॉर आगे नहीं होनी है. जैसा कि 1919 में भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ था, उस टाइम पे भी also there was in 1923 the League of Nations was set up, and the League of Nations was actually set up with this object: we will prevent another war.
तो उसको भी रोकते हुए देयर वाज अ वॉर ऑफ अ मच लार्जर मैग्नीट्यूड दैन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उसके बाद हमने यूनाइटेड नेशंस बनाया एंड अल्टीमेटली द बिगेस्ट character of a state is their sovereignty. And if we talk about an international watchdog जो हर चीज को देखता हो, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात कर लीजिए, दे cannot actually interfere or intervene between matters that are involved between two nations because of the fact that they are sovereign in themselves. There have been multiple conventions about refugee rights and whatnot, but you'll still see a violation of very basic human rights. The rule of refoulement being continuously violated, although refoulement is considered to be one of the worst things that international law and human rights has seen. But still, so the point of Austin, although I do not necessarily go that far by calling international law as a weak law or the vanishing point of jurisprudence is not from Austin. It was from I don't remember correctly right now. But yeah, it is not necessarily a vanishing point of jurisprudence. But international law is basically tied by the concept of sovereignty of each and every individual nation. So I hope I cleared your question. Anything else? Any other questions, participants? Mr. Kasif, some people were actually writing down questions. I can't really find them at the moment. If you